केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन और रॉयल एनफील्ड के प्रतिनिधियों ने लद्दाख में आइस हॉकी के विकास के लिए ब्लूप्रिंट लॉन्च की। द गेम चेंजर शीर्षक वाला ये ब्लूप्रिंट 2042 शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय आइस हॉकी टीम की भागीदारी को सक्षम करने के दृष्टिकोण का समर्थन करने की दिशा में एक कदम है। लद्दाख में आइस हॉकी के विकास का ब्लूप्रिंट सभी हितधारकों के सहयोग से और अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ IIHF के इनपुट के साथ विकसित किया गया है। दस्तावेज खेल के समग्र विकास पर ध्यान देता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा माहौल का निर्माण और जमीनी स्तर पर लीग की आधारित टूर्नामेंट प्रणाली शामिल है। आज के इस सभा के माननीय मुख्य अतिथि अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। नई दिल्ली 7 दिसंबर 2023 मध्यम आकार 250 सीसी से 750 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में वैश्विक नेता रॉयल एनफील्ड ने केंद्र शासित प्रदेश यूटी लद्दाख में आइस हॉकी के विकास के लिए एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट का अनावरण किया। गेम चेंजर शीर्षक वाला ब्लूप्रिंट दस्तावेज लद्दाख में खेल के समग्र विकास के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करेगा और 2042 शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय आइस हॉकी दल को मैदान में उतारने की महत्वाकांक्षा को साकार करने की दिशा में एक कदम है। ये खाका माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, अधिवक्ता श्री ताशी ग्याल्त्सन, मुख्य कार्यकारी पार्षद लद्दाख स्वाति पहाड़ी विकास परिषद LAHDC श्री मोहम्मद जाफर अखून को सौंपा गया। मुख्य कार्यकारी पार्षद कारगिल LAHDC और श्री रविंद्र कुमार IAS लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल और युवा और खेल विभाग शासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के सचिव सुश्री बिदिशा डे आइशर के कार्यकारी निदेशक द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में ग्रुप फाउंडेशन रॉयल एनफील्ड की CSR और सस्टेनेबिलिटी शाखा। आज का विकास हमारे देश के लिए बहुत रोमांचक है। मैं लद्दाख में आइस हॉकी के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट के निर्माण के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन और रॉयल एनफील्ड को बधाई देना चाहता हूं। यह ब्लूप्रिंट एक गेम चेंजर है और होगा निश्चित रूप से 2042 शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय आइस हॉकी दल को सक्षम करने का मार्ग प्रशस्त होगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम, जो कि खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, को सभी के लिए एक मजबूत ढांचे का निर्माण करके जमीनी स्तर पर खेल को पुनर्जीवित करने के लिए पेश किया गया है। भारत में खेले जाने वाले खेल लद्दाख में आइस हॉकी के विकास का ब्लूप्रिंट उस दिशा में एक कदम है और ये हिमाचली क्षेत्र में खेल के विकास के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने में मदद करेगा। सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल विभाग के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जिन्होंने संभावित रूप से ये प्रस्तावना भी लिखी है। दशकों से रॉयल एनफील्ड राइडर्स हिमालय की कोच कर रहे हैं और इस क्षेत्र में समुदाय के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस गहरे संबंध को देखते हुए रॉयल एनफील्ड का सामाजिक मिशन उस भूमि को वापस लौटाने की ब्रांड की प्रतिबद्धता है जिसे वे अपना आध्यात्मिक घर मानता है। रॉयल एनफील्ड में हमारा सामाजिक मिशन समुदाय और प्राकृतिक में लचीलापन बनाना है। विशेष रूप से प्रतिष्ठित हिमालय परिदृश्य में हम इस क्षेत्र में सतत विकास की सुविधा के लिए 100 से 100 हिमालयी समुदायों के साथ समर्थन और साझेदारी करने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के साथ हमारी साझेदारी लद्दाख और क्षेत्र में बढ़ती आइस हॉकी के लिए इस ब्लूप्रिंट के विकास को इस उद्देश्य से सूचित किया गया है। ब्लूप्रिंट में सभी हितधारकों के इनपुट और दृष्टिकोण शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी फेडरेशन IIHF द्वारा इसकी समीक्षा की गई है। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। वैश्विक मंच पर खेल में भारत के प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाने में गेम चेंजर बने में इस दस्तावेज के विकास के समर्थन के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर को इस ब्लूप्रिंट को विकसित करने के लिए रॉयल एनफील्ड को नियुक्त करने के लिए यूटी लद्दाख के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगी। आइशर की कार्यकारी निदेशक बिदिशा डे ने कहा, समूह फाउंडेशन ब्लूप्रिंट का एक प्रमुख घटक खेल के विकसित करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना है। ये स्थानीय
प्रतिभा को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस दिशा में रॉयल एनफील्ड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासन हम पूरे लद्दाख में प्रशिक्षण शिविरों की योजना बना रहे हैं, जहां इस सदी में लेह में लीग आधारित टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए टीमों को चयन किया जाएगा। भारत के 90% से अधिक आइस हॉकी खिलाड़ियों के लद्दाख से आने के कारण शीतकालीन खेल लचीलापन बनाने और विशेषकर युवाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने की दिशा में एक आशाजनक अवसर के रूप में उभरा है। ये एक साथ शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकते हैं, संभवतः रूप से लद्दाख को एक प्रतिष्ठित शीतकालीन खेल गंतव्य में बदल सकता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा संचालित रॉयल एनफील्ड ने भारत में आइस हॉकी और शीतकालीन खेलों के भविष्य को आकार देने वाले इस ब्लूप्रिंट को विकसित करने के लिए यूरोपीय व्यापार और तकनीकी केंद्र EBTC सभी प्रासंगिक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ IIHF द्वारा समीक्षा की गई और इनपुट के साथ निर्मित ये समग्र दस्तावेज अन्य चीजों के अलावा उपकरण और बुनियादी ढांचे, स्थानीय प्रतिभाओं की खोज और पोषण, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों और पेशेवर प्रशासन की भागीदारी के साथ प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की आवश्यकता को शामिल करता है। मैं ब्लूप्रिंट के समर्थन के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और लद्दाख में आइस हॉकी के विकास के लिए इस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए रॉयल एनफील्ड को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस हॉकी को पहले से ही लद्दाख में बहुत लोकप्रिय है और इस क्षेत्र का योगदान है। 90% खिलाड़ी यहीं से हैं। अब इस ब्लूप्रिंट के साथ अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ IIHF सहित सभी हितधारकों के समर्थन से, जिन्होंने जून 2023 में यूटी का दौरा किया और दस्तावेज की समीक्षा की और अपने इनपुट साझा किए, अब एक रोड मैप है खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए। जनवरी के अंत में हम लद्दाख में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेंगे और भारत सरकार और रॉयल एनफील्ड द्वारा हमें दिया गया समर्थन संघ की स्थापना की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। ये क्षेत्र एक खेल गंतव्य के रूप में है। लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल और युवा एवं खेल विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के सचिव श्री रविंद्र कुमार IAS ने कहा। हालांकि दस्तावेज को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा कमीशन किया गया है और इसे लद्दाख में खेल को विकसित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका दायरा सीमित नहीं है। इसका उपयोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे अन्य हिमालयी राज्यों में खेल को विकसित करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में किया जा रहा है। रॉयल एनफील्ड वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सहित पूरे हिमालय में शीतकालीन खेलों, विशेष रूप से आइस हॉकी और शीतकालीन पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के साथ काम कर रहे हैं, जहां ब्रांड, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे, उपकरण और स्पीति कप की स्थापना के साथ खेल के विकास का समर्थन करेगा। लद्दाख में रॉयल एनफील्ड ने पहले ही से ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के साथ खेल के विकास का समर्थन किया, जहां 20 कोचों को जर्मनी से लाए गए कोचों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। 500 से अधिक बच्चों को आइस स्केटिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जो आइस हॉकी खेलने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए शुरुआती बिंदु है। इसके अतिरिक्त 70 आइस हॉकी किट खरीदे गए हैं और उन खिलाड़ियों को वितरित किए जाएंगे जिनके पास खेल उपकरण तक पहुंच नहीं है। रॉयल एनफील्ड के बारे में, निरंतर उत्पादन में सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड ने 1991 से खूबसूरती से तैयार की गई मोटरसाइकिलें बनाई हैं। अपनी ब्रिटिश जड़ों से 1955 में मद्रास में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया था, जहां से रॉयल एनफील्ड ने भारत के मध्यम आकार के दोपहिया वाहनों की विकास को गति दी थी। रॉयल एनफील्ड आकर्षक, सरल, सुलभ और चलाने में मजेदार अन्वेषण तथा आत्म अभिव्यक्ति का एक वाहन है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे ब्रांड प्योर मोटरसाइकिलिंग कहता है। रॉयल एनफील्ड की प्रीमियम लाइन अप में मैच्योर 350 और सुपर मैच्योर 650, क्रूजर इंटरसेप्ट 550 और कॉन्टिनेंटल GT 650, प्रिंस ऑल न्यू हिमालयन एडवेंचर टूरर स्कैम 411, ADV क्रॉसओवर प्रतिष्ठित बुलेट 350 और क्लासिक 350 शामिल है। राइडर्स और एक उत्साही समुदाय को प्रचुर मात्रा में आयोजनों से बढ़ावा मिलता है। स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे उल्लेखनीय की मोटो वर्ष पहले राइडर मोनिया, जो गोवा में हजारों रॉयल एनफील्ड उत्साही लोगों का एक वार्षिक जमावड़ा है, और हिमालयन ओडिसी, कुछ सबसे कठिन इलाकों और सबसे ऊंचे पहाड़ी दरों पर एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है। आइशर मोटर्स लिमिटेड का एक प्रभार रॉयल एनफील्ड 2000 से अधिक वर्षों से संचालित होता है। भारत के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में लगभग 850 स्टोरों के माध्यम से दुनिया भर में 60 से अधिक देश रॉयल एनफील्ड के पास भी 2 विश्व स्तरीय है। तकनीकी क्षेत्र, बंटिंग, थोरोपे और यूके और चेन्नई भारत में कंपनी के 2 अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएं चेन्नई के पास औरादगम और बल्लम
बडागल में स्थित है। दुनिया भर में रॉयल एनफील्ड के पास नेपाल, ब्राजील, थाईलैंड, अर्जेंटीना और कोलंबिया में 5 आधुनिक सीकेडी असेंबली सुविधाएं हैं। आइशर ग्रुप फाउंडेशन के बारे में 2015 में स्थापित आइशर ग्रुप फाउंडेशन ईजीएफ रॉयल एनफील्ड की सीएसआर शाखा है और ब्रांड के सामाजिक मिशन का संरक्षण है, जिसका उद्देश्य समुदायों और प्रकृति में लचीलापन बनाना और विशेष रूप से प्रतिष्ठित हिमालयी क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाले और टिकाऊ बदलाव को बढ़ावा देना है। ईजीएफ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के और इन समुदायों के लिए एक संपन्न परिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए 100 हिमालयी समुदायों के साथ साझेदारी करने के लिए काम कर रहा है। अपने सामाजिक मिशन के हिस्से के रूप में रॉयल एनफील्ड का लक्ष्य 1 मिलियन सवारों को परिदृश्यों को पुनर्जीवित करने और उसके भीतर समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्यवाही करने में सक्षम बनाना है और इस प्रकार टिकाऊ अन्वेषण में सबसे बड़े सवार के नेतृत्व वाले आंदोलन को तैयार करना है। रॉयल एनफील्ड ईजीएफ के माध्यम से वर्तमान में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 50 से अधिक परियोजनाओं का समर्थन करता है। इसमें संरक्षण कार्यक्रम, आजीविका पहल, लद्दाख में ग्रामीण खेलों और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना, यात्रियों के लिए होमस्टे और पर्यावरण अनुकूल फिट स्टार्ट का नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंध पहल, हिमालयी समुदायों की अमृत सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए सवारियों को शामिल करना शामिल है। यूनेस्को के एक साथ अद्वितीय साझेदारी, संरक्षण, जिम्मेदार पर्यटन और विरासत पर युवा फेलोशिप और हिमालयी समुदायों के बुनकरों कारीगरों के लिए एक परिस्थितिकी तंत्र और बाजार लिंकेज कार्यक्रम बनाना है। ईजीएफ हेलमेट फॉर इंडिया भी चलाता है, जो एक कलाकार समूह है जो हेलमेट के उपयोग और सड़क सुरक्षा पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त ईजीएफ रॉयल एनफील्ड के स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और गोवा में समुद्री संरक्षण परियोजनाओं के हिस्से के रूप में तमिलनाडु के सामाजिक विकास और संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करता है। Social mission in the Himalayas and our ice hockey program. Thank you, Ravinder. Good evening, everyone. On behalf of Royal Enfield, I extend a very warm welcome to our chief guest, Shri Anurag Singh Thakur, Honourable Union Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports. I am also pleased to welcome our guests of honour today, Shri Jamgyal Sereng Namgyal, Honourable Member of Parliament, Union Territory of Ladakh, Shri Ravinder Kumar, IAS, Secretary to the Lieutenant Governor of Ladakh and Department of Youth and Sports, Administration of the Union Territory of Ladakh, Shri Mohd Jaffer Akhoon, Chief Executive Councillor, Kargil, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Shri Sereng Angchuk, Deputy Chairman, LAHDC, Leh. We are greatly privileged that you could grace us today, you could grace this occasion. I would also like to welcome all our guests and members of the media who have taken time out from their busy schedules to be with us here this evening, and especially our friends from the winter sports fraternity in Ladakh and Himachal Pradesh. At Royal Enfield, our social mission is to build resilience in communities and nature, and fostering a deep, long-lasting and sustainable change, particularly in the iconic Himalayan region. We are working to partner with 100 Himalayan communities to champion the UN Sustainable Development Goals and create a thriving ecosystem in the region. Royal Enfield currently supports more than 50 projects across the Himalayan region. These include conservation programs, livelihood initiatives, responsible tourism projects, and youth fellowships, among others. Our market linkage initiative for artisans and weavers of Himalayan communities as part of our Himalayan Knot program was launched in Mumbai last month. Royal Enfield has also created an eco-friendly community-run pit stop in Kharu, Ladakh for travellers. It is the first in a chain of such pit stops that we have planned. Royal Enfield aims to enable 1 million riders to take action towards regenerating landscapes and empowering communities. We are currently engaging our motorcycle riding community to document intangible cultural heritage of the Himalayas through a unique partnership with UNESCO. Our facility, called the Himalayan Hub in Thiog, near Shimla, Himachal Pradesh, will be a platform and a point of convergence of ideas and solutions for the sustainable development of the region. The program is particularly designed with the Himalayan youth as its focal point. It is this sense of purpose towards the Himalayas and Himalayan communities that has resulted in our partnership with the Union Territory of Ladakh and today's announcement.
Royal Enfield has been commissioned by the administration of the Union Territory of Ladakh to create a blueprint for the development of ice hockey in the region last year. The vision of the document is to consistently improve India's performance in the sport on a global stage, driven by excellence in Ladakh. After a year's worth of hard work and collaboration with all stakeholders, local and international, we are now ready with a document that we hope will be a step towards realizing India's dream of fielding an ice hockey contingent at the 2042 Winter Olympics. With 90% of ice hockey players in India coming from Ladakh, I believe this blueprint will be a game changer. The objective of this document is to adopt international best practices tailored to local on-ground requirements. The blueprint, however, is not limited in its scope and can be used as a template for the growth of this sport in other Himalayan states too. In Himachal Pradesh, where the Ice Hockey Association of Lahore and Spiti has already developed 4 functional ice hockey rinks, Royal Enfield plans to support training of clubs and to start a competitive tournament to develop the sport at a grassroots level. The blueprint looks at a holistic development of the sport and covers all aspects like training, scouting, nurturing local talent, equipment and infrastructure, creating a competitive environment, and professional governance, among others. I would like to take this opportunity to mention that we at Royal Enfield have been working with all stakeholders to develop winter sports, particularly ice hockey and winter tourism across the Himalayas. We have worked with the European Business and Technology Centre, EBTC, as knowledge partners to develop this blueprint. This blueprint has been reviewed by the International Ice Hockey Federation and developed with the support of the Ice Hockey Association of India. This is a path-breaking document. A long-term roadmap has been laid out all the way to our dream of fielding an Indian ice hockey contingent at the Winter Olympics in 2042. 9 clear milestones have been laid out, starting with a structured, decentralized league in 2025 and qualification for the IIHA World Championship Division 1 in 2033 that will help achieve that dream. While the blueprint envisages that developing the sport at a grassroots level with children between ages of 6 and 12 will enable them to participate in the 2042 Winter Olympics, we have already been working towards this end. Last year, over 500 children were taught basic to intermediate level ice skating, which is the starting point for anyone aspiring to play ice hockey at winter training camps in Ladakh. The blueprint also outlines the need for the development of infrastructure, equipment, and training for the consistent growth of the sport. To that end, we are supporting ice hockey at the grassroots level with equipment and training. Royal Enfield facilitated the training of 20 coaches from Ladakh in a train-the-trainer program with coaches brought in from Germany. A key component of the blueprint is to create a competitive environment at a grassroots level to grow the sport. This would provide a platform for local talent to be identified and nurtured. Towards this, Royal Enfield and the administration of the Union Territory of Ladakh are planning training camps across Ladakh, where teams will be selected to participate in a league-based tournament in Leh this winter. Beyond Ladakh, Royal Enfield is also supporting the Spiti Cup in Himachal Pradesh this winter. We will continue to facilitate and collaborate with the administration of the Union Territory of Ladakh and different stakeholders to develop the sport. I would like to extend my gratitude to the Honourable Union Minister Shri Anurag Singh Thakur for inspiring and supporting the vision of this document, and for his leadership in the growth of sports in India and for championing the cause of winter sports through the Khelo India initiative. He has very kindly lent his voice to the blueprint with a foreword. Before I conclude, I'd like to mention that while today's focus is ice hockey, our winter sports program in Ladakh is not limited just to the ice hockey sport. As part of our Chantal football initiative, Royal Enfield has created the world's highest AstroTurf, the first in any school in Ladakh, to help nurture football talent at the grassroots level. We have supported the training of more than 350 local school children across 18 villages in Chantal and facilitated the training of nearly 15 football coaches who in turn have successfully trained school children. In conclusion, I would like to state that our relationship with the Himalayas over decades has taught us its people and communities offer tremendous potential. For Royal Enfield, the Himalayas is our spiritual home. Particularly when it comes to sports,
thanks to the inherent resilience and strength which comes from being nurtured in some of the harshest and most rugged environments in the world. We hope that these steps to develop a popular sport will not only enable our sporting ambitions in a global arena, but also empower Himalayan youth to pursue their ambitions and aspirations sustainably and meaningfully. Thank you very much. Thank you, Bidisha, for that wonderful insight into our Royal Enfield social mission. As a motorcyclist myself, I would like to take this opportunity to tell you that we at Royal Enfield really consider the Himalayas our spiritual home. It is iconic for us and for everyone from that region. So, a round of applause maybe for our social mission. Right. So, I will now like to take this opportunity to invite the Honorable Union Minister and all our dignitaries from Ladakh, Bidisha and Vigyat to come and take their seats on the dais. I now invite Shri Anurag, Deputy Chairman, Ladakh Autonomous Skill Development Council, to share a few words with us. Good evening and to everyone. Our Honorable Union Minister Shri Anurag Singh Thakur, our Honorable Member of Parliament Shri Ravinder, our Commissioner Secretary Shri Ravinder, Chief Executive Councillor and Chairman LAHDC Kargil, Dr. Jaffer Bidisha, Executive Director of Eicher Group, and all our ice hockey lovers of the association and of the media person. First of all, really it's a great honor to have our Honorable Minister here. He is not only Minister of Government of India, he is also a second representative from the Ladakh. He always support us with different capacities, fulfill our grievances. Thank you very much, sir. And so for the social initiative of Royal Enfield is concerned, today we are not launching the blueprint of this game changer, so-called game changer project. We are also, I think we are also celebrating the journey of Royal Enfield. They have taken initiative in the Ladakh. They have their own journey in Ladakh. So for this social initiative is concerned, they have met many play field in various schools. They have already installed many solar projects for giving the electricity, and many other initiatives they have already taken in the decade of more than a decade. They are supporting the entire Ladakh. Before becoming a UT, we are always having a scarcity of always constantly with the funds. So that time the many NGOs are coming forward to help us to install the electricity, install the canals, agriculture, irrigation. So Royal Enfield is one of them. And this time they have come with one machinery, visionary project to build up one ecosystem for this
accelerating what we call ice hockey in Ladakh. Not only in Ladakh, entire Himalaya, including Himachal and Ladakh. So these two states are quite famous for ice hockey. So for the ice hockey of Ladakh is concerned, we have already represent country at many fronts. So in coming years, this initiative will not only supporting as a financial support, but they are also going to do infrastructure development and the training, organizing tournaments. So with all the support of locals, NGOs, local bodies. So I'm really would like to share my gratitude and thanks to the Royal Enfield, the initiative that you have taken. So in coming year, we are since decade, 9-10 years, we are trying to develop the infrastructure which was set up in the day, but it again take 1 more years because before becoming UT, we are always suffering from the lack of fund. But after becoming UT, there is so many changes in design changes, and because of all the administrative hurdles, we could not able to complete this year even. So I feel very sorry to all the locals players that we could not give. Last year we have already committed, even the UT administration and council have committed that we are going to give you a full-fledged ice hockey ring at Leh, but maybe next time we are trying to start with that commitment. So now the Royal Enfield has come up to support us. So I think that our youth will get a good opportunity. Even on the village level, all the councillor, honorable councillor are building up, trying to convert the traditional tanks, right, traditional reservoirs into the ice hockey. So all at the village level, everyone are playing during the winter. They are playing the ice hockey. So since last years, we are giving equipment because the equipment of the ice hockey is quite expensive. So most of our people are not able to afford. So we are giving on the subsidy basis because sometimes it costs more than 1 lakh. So 75% are provided by the government. So 25% have to paid by the beneficiaries. So since last year we have started providing it, helping them a lot. So I don't want to take too much of time. Once again, I would like to thank the Honourable Minister and taking up this initiative to the Eicher group. Thank you very much. Thank you very much, sir. Normally, when we speak of Ladakh, people outside the region associated with Leh, but there are actually 2 districts. One is Leh, the other one is Kargil. And right now, I would like to invite Dr. Mohd Jaffer Akhoon, Chief Executive Councillor, Kargil, LAHDC, to come and share his perspective. Honorable Union Minister for Sports, Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Member of Parliament, the Honorable Deputy Chairman, Ladakh Autonomous Regional Council, worthy Commissioner Secretary Ravinder ji, Ma'am ji, and all other dignitaries. Good evening to all of you. Thank you, Honorable Sports Minister Anurag Thakur ji and other dignitaries from the Union Territory of Ladakh present here. Your support towards sport during your tenure as Sports Minister has seen India reach new heights, including crossing 100 medals in both Asian and Para-Asian Games. We are sure with your support and encouragement, India will make similar strides in winter sport like ice hockey as it has
in all other sports. Thank you to Royal Enfield for your support in helping create this blueprint for the development of ice hockey in Ladakh especially in Kargil part of Ladakh. A team of international experts had accompanied the Royal Enfield team earlier this year in Kargil to visit some of our ice hockey facilities, and other inputs have been taken on board. Kargil will have a world-class ice hockey rink within the next few years. This blueprint is a robust document and lays out a very solid long-term plan over the next 2 decades for the sport of ice hockey. Like this blueprint has mentioned, it will indeed be a momentous occasion to see the Indian team participate in Winter Olympics by 2042 or even earlier. While ice hockey is the primary sport of our region, there are a lot of talented youth in Kargil who are seeking opportunities in this field. While it is an objective to create more talented ice hockey players, one hopes this blueprint motivates more youngsters to take all sports. Sir, I'll take this opportunity because you are holding the information and broadcasting. Sir, I hope Kargil part of Ladakh will go in new heights in not only in sport but we have some issues in radio Kargil. I hope you are good celebrate address those issues also. I once again I would like to thank Sports Minister Shri Anurag Thakur ji and point out the limitless possibilities for sport that exist in hilly region like ours. We would early urge you towards taking a keen interest in development of our young talent across sports and not just in ice hockey. I also, sir, I cordially invite you to Kargil, Ladakh next in 2024. Please have a visit to Kargil next year, sir. I will be highly obliged. This is from my invitation from Hill Development Council, Kargil, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Akhoon. More than 100 medals, and may they never stop coming. Earlier on in the program, Bidisha had said that this document was commissioned about a year ago. I would now like to invite a man whose office was instrumental in the creation of this document. Shri Ravinder Kumar, IAS, Secretary to the Honorable Government of Ladakh and Department of Youth and Sports. I would like to thank Honorable Union Minister Shri Anurag Thakur, Honorable Member of Parliament Ladakh Zamek Sering Namgyal, CEC Kargil, Deputy CEC Leh, and Royal Enfield teams who are part of this program. I want to thank the Royal Enfield for developing this blueprint. We have discussed it, I think, over a period of, 1 year, and we are discussing it with different stakeholders, and now we are happy that this blueprint is ready, and this is going to help Ladakh in developing ice hockey as well as the other winter games also. Also, as discussed during the presentation of Bidisha, we are hoping that someday Ladakh will be having a major stake in the Winter Olympics, in the ice hockey and other games also. So that is our dream, and that we are trying to work hard for that. Also, from last 3 years, I am seeing the development of ice hockey, and we have just started our journey, and we are hopeful that in the next 2-3 years we will be having some good development in this game. And I am thankful to Honorable Minister for sanctioning the Khelo India Center of Ice Hockey in the Ladakh, and that is functioning well, and a lot of small children are doing their basic training in ice hockey. And also we are thankful to the Honorable Minister for sanctioning a
UT level center of excellence which will be facilitating all the sports including ice hockey. So that will be a great step for developing the sports in Ladakh. From sports department Ladakh, we are targeting a long-term vision for the ice hockey and other winter games, and we are focusing more on infrastructure, equipment, training, exposure and talent development. And also with the support from the Union Ministry, we are hopeful that we would be achieving great heights in the winter games and other games also. And I want to invite all the media persons in Ladakh during the next February, because we are holding this year Khelo India Winter Games of ice hockey and other ice games. So, and one more thing that I would like to highlight, that ice hockey is one of the fastest game in the world and also one of the most beautiful game in the world. So you can watch and you can even learn the ice hockey basics if you come to Ladakh during winters, and we welcome all the stakeholders, and thank you all for inviting me in this event. Thank you, Jay. Thank you very much, sir. I would now like to invite Shri Jamyang Sering Namgyal, Honourable Member of Parliament, Union Territory of Ladakh, to share his perspective of things. नमस्कार चलिए, आज के इस सभा के माननीय मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई आदरणीय श्रीमान अनुराग सिंह ठाकुर जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मैं आपको सबसे पहले स्वागत करता हूं और पूरे लद्दाख वासियों की ओर से आपको कीमती समय निकालने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और आपके साथ मंच पे विराजमान लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के ऑनरेबल चेयरमैन साहब, LAHDC डिप्टी चेयरमैन साहब और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स रविंदर जी, और यहाँ रॉयल एनफील्ड की ओर से थे मैडम जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज लद्दाख के स्पोर्ट हिस्ट्री में और विशेष रूप से आइस हॉकी के इतिहास में वाकई एक गेम चेंजर ब्लूप्रिंट यहाँ पे आज लॉन्च होगा, और उसके साथ साथ एक दशा और दिशा तय होगा कि आने वाले फ्यूचर में आइस हॉकी को लेके हम कहाँ तक आगे इस देश को, इस दुनिया को हम ले जा सकते हैं। मैं मंत्री जी को इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके स्पोर्ट मंत्री बनते ही देश ने स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत तरक्की किया, और विशेष रूप से लद्दाख को काफ़ी सपोर्ट मिला। जिस तरह अभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब यहाँ बता रहे थे, हमें स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से खेलो इंडिया के सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो लद्दाख में मिला है, वो वाकई हमारे लिए गेम चेंजर होगा। और आइस हॉकी के लिए मैं बता दूं, पूरे देश में सबसे अच्छा फ्यूचर इसका हिमालयन क्षेत्र में है, ये हमें सबको जानना होगा, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग एक नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ जब पैदा होते हैं उस वातावरण में, और साथ ही साथ एक नेचुरल आइस के साथ हम पैदा होते हैं, तो ये तो हमारा जीवन है। और मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ उपस्थित हमारे श्री पीटी कुंजाम जी के साथ इनके टीम ने काफ़ी सालों से विंटर स्पोर्ट क्लब ने जो मेहनत किया, जिसके कारण से लद्दाख ने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल इवेंट में एक देश का पहचान बनाया। और आज हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स लद्दाख ने जितना प्रोड्यूस किया वो किसी भी हिमालयन क्षेत्र ने प्रोड्यूस नहीं किया। और हम चाहते हैं इस तरह के अच्छे अच्छे प्लान बने, अच्छे अच्छे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त इसलिए करना चाहूँगा, लद्दाख अलग से यूटी बनने के बाद सफिशिएंट बजट देके आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हमारे युवा पीढ़ियों को, क्योंकि आइस हॉकी का इक्विपमेंट इतना महंगा होते हैं, हम एफर्ट नहीं कर सकते, खासकर गरीब आम लोग। आज हमारे यूटी के बजट से, यहाँ पे रविंदर जी बैठे हैं, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, यूटी के बजट से अलग से जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हर गांव-गांव में एसोसिएशंस को, क्लब्स को डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, उससे ग्राउंड लेवल पे एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। और इसका रुचि तो इतना है, आज फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस गांव में भी हम टूर के लिए जाते हैं, विंटर आने से पहले डिमांड आ जाता है, साहब हमारे यहाँ आइस हॉकी का रिंग बना दो।
हमें इसका इक्विपमेंट दे दो। इसके कोई चिंता नहीं कि ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद इसी के लिए पैदा हुए हैं, लोगों का ये मानना है उस फील्ड के लिए। तो वेल ट्रेन, वेल इक्विपमेंट, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज आइस हॉकी का भविष्य लद्दाख में बहुत देश को आगे ले जाने की जो क्षमता रखते हैं। मैं इसलिए भी मंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आपने निर्णय लिया इस बार जो है खेलो इंडिया विंटर गेम जो है लद्दाख में होगा, और उसमें स्पेशली आइस हॉकी को फोकस करके जो किया जा रहा है। मैं आग्रह करना चाहूँगा ये खेलो इंडिया विंटर गेम लद्दाख में होगा तो वहाँ के जो स्टेट बॉडी आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के साथ कोलैबोरेशन में इसको करना चाहिए, ताकि उसमें ऑथेंटिसिटी आए। नहीं तो हम ये जानते हैं कि ये देश में खासकर स्पोर्ट के फील्ड में अभी तो मोदी जी आने के बाद बहुत कुछ बंद भी हो गया, नहीं तो स्पोर्ट में भी जो है बहुत घोटाला चलते थे पहले। हम नहीं चाहते हैं कि इसमें जो है कोई अदर पर्सन आके इंटरफेयर करे, चाहे लेह में करते हो, करगिल में करते हो, जहां भी करते हो, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ जितने प्लेयर्स है जिस स्टेट से लाना है वो एक्चुअल उसी स्टेट के रहने वाले हो। अब लद्दाख के नाम से कोई दिल्ली वाले खेलेंगे, दिल्ली के नाम से कोई हरियाणा वाले खेलेंगे, तो कहाँ देश आगे जाएंगे। मुझे इतना ही कहना है। और रॉयल एनफील्ड को मैं आभार व्यक्त इसलिए करना चाहूंगा, आज आपने बहुत अच्छे एक ड्राफ्ट प्लान जो आपने बनाया है, इसके अलावा भी रॉयल एनफील्ड ने जो है बीते सालों में लद्दाख में काफी कंट्रीब्यूशन थे, बहुत कंट्रीब्यूशन आपने CSR के माध्यम से किया है। मैं इस चीज के लिए भी आपको ब्रीफली आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मंत्री जी का समय बहुत कीमती है, जल्दी मंत्री जी को जाना है, इसलिए मैं अपने वाणी को यहाँ अभिनंदन देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त, धन्यवाद। Thank you so much, sir. What a beautiful description. A document which will decide the disha and dasha of the future of a sport that seeks to support India's vision to become a sporting superpower. And with our eyes set firmly on 2042 now, I would like to request Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, to share his vision for the sport. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, friends from media, namaste, very good evening to all of you. I am pleased to be present here at the release of blueprint for the development of ice hockey in Ladakh, the game changer. In a national capital, in a program like this, only for the sports lover and only pahadi on the stage is also game changer. कहाँ संभव होता है, और लद्दाख वाले तो यूटी करते थे मेरे सब भाई। So I think that desire to have Ladakh as a union territory, that has also been fulfilled by none other than Prime Minister Modi, and we are grateful that Ladakh is progressing day by day. They're getting all their rights, and I would like to congratulate the administration of the Union Territory of Ladakh and Royal Enfield for the creation of this blueprint for the development of ice hockey in Ladakh. I would like to especially thank Hon'ble LG, who is not present among us today. It took a lot of pain when we discussed with the Honorable MP and my dear friend, Shri ji. We've been discussing this for last couple of years with the earlier LG and the present LG also. And I'm glad they have taken it to the conclusion, and I'm grateful to the Royal Enfield team for making this happen. I mean, at times it looked like कि ये सब क्लब तक ही खेलते रहेंगे, लेकिन एक भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। This blueprint is game changer and will certainly pave the way to enable an Indian ice hockey contingent to participate in the 2042 Winter Olympics. कितने लोगों को विश्वास होता है? कुछ हाथ तो खड़े हुए देखे मुझे, काफी हाथ खड़े हुए।
एक समय ऐसा था कि भारत में ओलंपिक्स या ओलंपिक्स गेम की बात करो, सब लोग कहते थे पता नहीं होगा नहीं होगा. But today we can proudly say that if I have to talk about only last 2 years, from Tokyo Olympics till now, if you look at Tokyo Olympics, Paralympics, Deaf Olympics, then Commonwealth Games, various Asian Championships to the World Championships and the Para-Asian Games, we have won the highest medal ever in all these tournaments in the last 75 years. और इस बार जब मैंने कहा था इस बार 100 पार, तो बहुत सारे लोगों ने नीचे से कहा 70 आए थे पिछली बार, 100 पार कहाँ करोगे? Because we worked hard on that, we provided all the facilities. Programs like Khelo India has turned around, and the schemes like TOPS, Target Olympic Coding Scheme, has benefited so many players. And we have not only said, but we have achieved. We have won more than 100, we have won close to 107 medals in Asian Games and 111 medals in the Para-Asian Games, which is the highest ever. Now let me come back to the beautiful region of Ladakh. How many of you have been to Ladakh? बहुत को अवसर मिलने वाला है. How many of you are from the media? इतने? And how many of you are influencers? मीडिया का बड़ा वर्ग है. तो एक काम तो कर सकते हैं, जिसकी 3 बेस्ट स्टोरीज होंगी, उन 3 को तो आज इनवाइट कर देते हैं इसके लिए. क्यों? कर दिया है? चलो कर देते हैं. So let me come back to the Ladakh and the blueprint for the ice hockey. This will help us to make Ladakh an important international destination for ice hockey in the world, capitulating India on the international stage. The blueprint, which has been developed in the consultation with various local stakeholders and international experts and reviewed by the International Ice Hockey Federation, aims to create a roadmap for the development of ice hockey in a region like Ladakh, where the sport is extremely popular. I can say this because it has a great impact in my state of Himachal Pradesh also, in an area called LAHDC, that is the district which is adjoining to the Ladakh. A winter sport like ice hockey has multiple benefits for the local community, as it helps unite a community behind a sport that they can associate and enjoy during the winter's time. It provides an additional source of livelihood for the local community who are heavily dependent on tourism, which is predominantly oriented towards the summer months. So in winters they got a lot of things to do now, from ice hockey to other various winter sports. Most importantly, it empowers the youth of the hill states of India through sports and help them develop important life skills required to excel in their future. This will forge a path for the young Indians and the young minds to be inspired to dream and discover their inner talents. At the same time, it will help build character. I am glad that the blueprint is a holistic document that covers all aspects of developing a sport in a phased manner. The blueprint covers essential aspects such as the requirement of sporting equipment, multidisciplinary training programs, developing infrastructure and creating all year-round training facilities, support systems like governing bodies and refereeing, scouting and nurturing of local talent, and lastly, creating a competitive environment for the sports by setting up regional and national level tournaments and leagues. The blueprint, though prepared for Ladakh, stands as a holistic roadmap that can be easily applied to other Himalayan states like Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, and Arunachal Pradesh,
where ice hockey can be played naturally in the winter. As I belong to beautiful state of Himachal Pradesh, and as I said earlier, the adjoining areas of Lahaul Spiti to Manali, Kullu can be developed for further taking this game to the district of Shimla and maybe to the district of Chamba as well, where ice hockey could be played. So we can do our bit in the state of Himachal Pradesh, but I'm looking at when representatives of Royal Enfield are present on the dais and in this beautiful hall, that let us look at these 4 states, and if you have to have a league, then let us look at first the state, then at the city league, where most of the cities can participate at the club level. So I'm also happy to acknowledge here, every year for the last couple of years, I get a lot of videos, photographs from the Lahaul Spiti where the young players are playing the ice hockey. It has become very, very popular, where a lot of foreign clubs, even the embassies are also helping with the equipments and gears. If you can create a team of people who can, either they can donate equipments, someone can come and create the facilities, let them do their part, from the embassies to the companies like Royal Enfield to others. As a government of India, I can say here, under the Khelo India program, I'll make sure that the ice hockey is promoted in all the 4 states. I can make sure of that. So Khelo India is not merely a scheme, it is a movement. When I talk about a movement, it has spread across India. And just one catchphrase of Khelo India has inspired lakhs and lakhs of Indians to take up sports as a hobby or as a career. Khelo India Games have played a pivotal role in the promotion of the scheme, with a total of 11 Khelo India Games organized so far, 5 Khelo India Youth Games, 3 Khelo India University Games and 3 Khelo India Winter Games. We have also decided this year that we are not going to restrict it to the Jammu and Kashmir. We will take it to Ladakh, Himachal or Uttarakhand also, so that few games are played or event is taken place in the month of Feb 2024 next year. So Khelo India Winter Games has a flagship event concerning winter games, winter sports. We are increasing the number of sports disciplines this year. In last edition in the Feb 2023, more than 1,500 athletes participated across 11 sporting disciplines, and the event has been a huge success. I was present there at the inauguration. While the book relates to the ice hockey and its development in India, I am very happy to state that the Indian athletes have represented our nation at the Winter Olympics 11 times to date, beginning from the 1964. The blueprint for the development of ice hockey in Ladakh is a step towards developing a strong framework for the growth of ice hockey in the Himalayan region. One more thing I would like to say here. If I look at the Atal Bihari Vajpayee Mountaineering Institute in Manali, I see a lot of participants coming from the state of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra, Telangana. So let's not restrict it to the state of Himachal Pradesh or Uttarakhand, Arunachal and Union Territories like Jammu, Kashmir and Ladakh. We can scout the talent from the other states also. We can hold camp for them. They can come well before, they can be there for 10-15 days, and we can create a good team. And we can also make it a part of Ek Bharat Shresth Bharat. The way Prime Minister Modi, he always asks us to engage, with various states. Like one of the programs he run is Tamil Kashi Sangamam. So people from Tamil Nadu, they travel to the
Uttar Pradesh and be part of this program. Other is the Saurashtra Tamil Sangam. So that is more of cultural program. Here we can have the youth from these states, from various states, who can do skating to other things, and they could be part of this ice hockey program as well. If that is possible, we can look at that also to scout the talent. As far as the state, as far as the Ladakh region is concerned, many of the previous speakers, Hill Council chairman to others, they have mentioned to create facilities in Ladakh. Let me mention a couple of things here that we have sanctioned in the last couple of years. We are laying a synthetic track and astroturf for football in the open stadium. A synthetic track and a football synthetic track, astroturf, in the stadium at Leh. The total cost will be close to 10 crore 50 lakh rupees. The second is construction of gymnasium hall at NDS Sports Complex in district Leh, 1.13 crore rupees. Construction of ice hockey rink at the 24th Battalion ITBP at district Leh, 2.77 crore rupees. Other infrastructure projects in the region of Ladakh, 3 Khelo India centers sanctioned, 1 in Kargil, 2 in Leh. Khelo India State Center of Excellence in Sports, which has athletics, boxing, archery discipline in the open stadium of Spituk Leh, sanctioned by the SAI, which will cost about 3.13 crore rupees. Other request which has been made here, let me have a look at that. I'll ask the department to have a look at it so that we can have more facilities in the Ladakh and Kargil region. I'm sure Leh and Kargil region can have more facilities. Let me in the end thank the local administration of Ladakh and Royal Enfield for taking the initiative, come out with a blueprint for the development of ice hockey in Ladakh. It's going to be a game changer. Not only to create facilities, not only to create a blueprint, but I'm sure the target set for the 2042 Olympics participation, yes, we can do it. If India can pitch for the 2036 Olympics, if in 2036 we're going to host the Olympics, we're going to bid for that, I'm sure we can do wonders. At the same time, we can also look at Indian contingent. In 2042, we have been participating in the past, but I'm sure ice hockey, we can do a great job in the coming years. We can also look at the global leagues. We can create players here. We can send them for the training purpose. And let me have a look if we can include them under the top scheme. If they can be trained locally or globally, we'll be more than happy to look at that. Let me once again, in the end, thank the local administration and the Royal Enfield for their initiative. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. What an interesting way to look at the Khelo India initiative. A movement to change the game. And the game really changes when we all come together, collaborate to develop sports. In this case, ice hockey in Ladakh in particular. I would now like to invite Bidisha, Shri Anurag Singh Thakur and Shri Ravinder Kumar to officially launch the blueprint. बहुत बढ़िया। I will request the still photographers to come up to the sofa, take their photos, take a couple of... Thank all our chief guests, Shri Anurag Thakur, Union Minister, Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports. Sir, your vision and determination is driving India from grassroots levels to excel in sports, and we are sure that ice hockey too will receive the
say, support under your leadership. I would also like to thank our guests of honor from Ladakh, who are representing the people of beautiful people of Ladakh, the primary beneficiaries of this effort. We hope that the blueprint serves its purpose and that ice hockey thrives across Ladakh and other parts of the Himalayas. I would like to thank the Honorable Lieutenant Governor, who could not make it here today, Mr. B.D. Mishra, but his representative, Shri Ravinder Kumar, Secretary to the Honorable Minister and Secretary Youth Affairs and Sports. I would like to thank Shri Nadia, Member of Parliament. I would like to thank Shri Mohd Jaffer LAHDC Kargil and LAHDC Leh for the presence here and for receiving the blueprint. I would now like to applaud and also give a heartfelt appreciation to all those people who contributed towards the development of this blueprint. This holistic and comprehensive roadmap has been developed with hours of detailed discussion with local stakeholders and international experts. We would like to thank our knowledge partner, European Business Technology Center, EBTC, with a special thanks to Vincent Nord and Shinjoy Mukhopadhyay. We would like to thank Mr. David Fitzpatrick, a legend of the sport, an international ice hockey player and expert with over 30 years of experience, who has been instrumental in bringing in international best practices to develop ice hockey in India. We would also like to thank the International Ice Hockey Federation, especially Vice President Mr. Abbas, who actually brought a delegation down to India to understand the various aspects of the sport and to see how they can support, how the IIHF can also get behind this effort to support ice hockey. We would like to thank the Indian Ice Hockey Federation, Mr. Harjinder Singh Jindi, who is also present here. We would like to also thank the Ice Hockey Association of Ladakh and the Winter Sports Club for their contribution towards the development of the blueprint, the National Women's Ice Hockey Association, and all the ice hockey players from Leh and Kargil who have actually spent time and given their invaluable insights towards the development of the sport. I would like also to take this opportunity to thank the management of Royal Enfield and the team of Eicher Group Foundation, who has put their hard work and determination to actually develop this, to bring this document out. Lastly, I would like to thank everyone who has come here, especially the media and the press, to actually take this message forward. We have a long journey ahead of us, but we are confident that with all your support and goodwill, and now with the game changer, we will have an Indian ice hockey team represent India at the Winter Olympics. Thank you all for coming. Please join us for the next.